Economic students know UPSC, some know RBI, नेट, PhD, कॉर्पोरेट, MBA, कंसल्टिंग, सब ऑप्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना रहता है. But there is one career path where economics is not optional. It is not just one paper or just an advantage. Economics is the job itself. And strangely, many students discover it very late. That path is the Indian Economic Services, IES. And today we are going to understand why IES is one of the most underrated career options for serious economics students. Today, let's decode IES properly. Welcome to Econiti, where economics makes sense. I'm Komal, and this is the fourth video in our series, Careers in Economics, a complete roadmap. In the previous videos, we looked at the broad career map after economics. Then we did an honest comparison of UPSC versus IES versus RBI DEPR. And then we went deep on UPSC economics optional. आज का video IES. It gets its own video, of course. The depth that it deserves. So if you have been thinking about IES seriously, or you should have, right? But somehow you never did. This one is very, very useful for you. So let's get started. First, let us talk about what IES is and what it isn't. Okay. So there are like three confusions hote hain usually. This is such a name that comes with a lot of misunderstanding. So पहली चीज वो clear करते हैं. पहली चीज IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं है. So अभी तो खैर Google has understood. It has some search history that it knows that I am an economics person. But if you today go and type IES on your laptops, you will get Indian Engineering Services, right? Even if I do today, it will show me Indian Engineering Services / Indian Economic Services. What do you mean? ऐसा कुछ पूछेगा. IES, of course, there is Indian Engineering Services as well. But we are talking about the IES that is relevant for economic students. And that is Indian Economic Services, right? We will be talking about IES Economic Services when I say IES. The second confusion, um, you may have it or you may not have it, but it's useful to get it out of the way. IES IAS with an economics paper नहीं होता है, ठीक है. It is a specialist service. IAS एक अलग सर्विस है, it's a generalist service. अलग अलग रोल्स हैं, अलग अलग एग्जाम्स होते हैं. The third confusion is the most critical. IES is not ISS. So इन दोनों के जो notifications आते हैं ना वो साथ में आते हैं, and that is why a lot of students feel that IES and ISS are slash. So it's or. No, they are two separate roles. Again, they are two separate exams. दोनों के नोटिफिकेशन साथ में आते हैं, लेकिन IES is Indian Economic Service, ISS is Indian Statistical Service. It's a separate service only for statistics, right? साथ में आते हैं तो इसीलिए confusion होता है, लेकिन ये लोग separate हैं. So now that the three confusions are over, let us define IES properly. IES is a Group A central service under the Government of India. Okay. It is controlled by the Department of Economic Affairs and the Ministry of Finance. Sorry, Economic Affairs under the Ministry of Finance. The training academy for this happens in IEG Delhi. Delhi School के पीछे जो building है, Institute of Economic Growth, वहाँ पे इसकी training होती है. This idea was originally Jawaharlal Nehru's. So service was formally established in 1961, as you can see over here. And since then, it has been India's official economist cadre inside the government. याद है मैंने second video में बोला था कि UPSC CSC creates administrators, IES creates government economists, right? This is the identity of IES. The conducting body is UPSC, Union Public Service Commission, जो कि दोनों का ही conduct करता है, CSC as well as IES, लेकिन ये दोनों exams अलग अलग हैं. All right. Now let us talk about why I'm saying that IES is a hidden gem. ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्यों इस वीडियो का टाइटल है? Because the reason is that IES gives you three things together.
Okay, and this combination is genuinely rare. What are those three things? The first thing is government stability. You are going to be in a permanent government job, you'll be a group A officer in the central government. So you will get all the central government security and benefits, right? Housing, other benefits, everything that makes a government career attractive in this country. The second is policy relevance. So you will be working at the core of India's policy system. Budget हो गया, scheme हो गया, reform, economic analysis, reports. This will be your actual work, not just background knowledge that you happen to have. हाँ? So जो economics पढ़ी है, public policy में interest है, direct application कर रहे होगे. Third, you will be using economics daily, right? So in IAS, economics is not a paper that you cleared, it is your job. Collector नहीं बन रहे हो आप, administrator नहीं बन रहे हो, you are becoming a government economist, and here your degree will be working for you every single day. Okay, so this combination, stability plus policy relevance plus use of your economics degree, I don't think any other single career path gives you all three together. Okay, so ये चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है इसके बारे में, right? And then you also have the scope. So IAS is an inter-ministerial service. IAS officers don't just sit in one ministry. The cadre posts are spread across 55 union government ministries and departments. So you have finance, you have agriculture, you have education, health, environment, energy, industry, rural development. Practically every major ministry where India's policy is being shaped. So you will not be stuck in one corner. Your economics will travel with you across the entire policy machinery of the government. And here is one thing that most students don't know about. The multiplier, I call it the multiplier. It is basically what we call deputation. हाँ? Deputation का क्या मतलब होता है? Deputation means that you will be temporarily working outside your own cadre in another organization while still remaining an IAS officer. So you can think of it as a secondment, right? So your service continues, but your posting moves to a different institution for a defined period. So IAS officers can go on deputation to the World Bank, IMF, ADB, UN, इंटरनेशनल पॉलिसी एनालिटिक्स के लिए आप इन एजेंसीज में जा सकते हो, प्रोग्राम इवैल्यूएशन के लिए जा सकते हो. यू कैन ऑल्सो मूव टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, ट्राई हो गया, जहाँ पे अगर कभी इकोनॉमिक एक्सपर्टीज डायरेक्टली नीडेड है, सो यू कैन बी पोस्टेड देयर. यू कैन ऑल्सो गो अंडर सम स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर फिजिकल रिफॉर्म्स, सेक्टर स्ट्रैटेजीज हो गया, आउटकम बजटिंग सपोर्ट. Sometimes you can also get placed in foreign governments for bilateral advisory roles, yeah, economic cooperation assignments. You can also be placed in think tanks and research for any policy research assignment. So your IAS career is not confined to one ministry, or in this case, like not even one country. So once you're an IAS officer, your options stretch from national policy system to international institutions. So this is the career multiplier effect that makes IAS genuinely aspirational, and not just for what it gives you on day one. It what it gives you, where it can get you over an entire career. Okay, so IAS, that's why I say it is a hidden gem, not because it's obscure, but because it exists in plain sight, and many economic students still overlook it. चलो, सो ये तो मैंने बहुत सेल कर दिया इस कोर्स को. अभी कुछ प्रैक्टिकल बातें करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी एंड सीट्स एंड ऑल दोस important aspects of it. Some very important numbers we have here. What is the eligibility? The qualification is required. You have to have a PG in economics, or you can also have an applied economics, business economics, econometrics from any recognized university. Age limit जो है वो you can be from 21 to 30 years. If suppose you are giving in 2026, then on 1st August 2026 you should be between this age, and जो standard category relaxations है they apply. Number of vacancies,
इस साल हर साल थोड़ा वेरी करता है. इस साल there are 16 seats. I'll come back to this. This is tentative. It can be changed, but usually यही नंबर होता है. 16 से 18 सीट्स के करीब होते हैं. एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, आई टोल्ड यू दैट इट इज यूपीएससी. सीएससी से अलग एग्जाम होता है. एग्जाम जो है वो यूजुअली मिड जून में होता है. इस साल जैसे कि 19, 20, 21 को एग्जाम है, तो इसी के अराउंड हर साल एग्जाम होता है. वन इम्पॉर्टेंट नोट है यहाँ पे बिफोर आई गेट टू द सीट्स, इज दैट बीए इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए अभी दिस इज नॉट ओपन फॉर यू, राइट. यू विल नीड अ पीजी डिग्री. अगर बीए में हो तो नेक्स्ट स्टेप एमए इकोनॉमिक्स, और उसके बाद आईएएस ओपन्स अप फॉर यू. If you are in MA though, even if you're in the first year, you can still appear for it. So this is different from your RBI. RBI में तुम्हें अपना provisional degree दिखाना पड़ता है, then you can appear. For IES, you can appear. You will not qualify, but वो pitch inspection के लिए तुम जा सकते हो. You can sit in the exam. Even if you clear it, you will not qualify the exam. Now, let's be honest about the seats. 16 seats हैं यहाँ पे. It is a small number that cannot be ignored. The estimated number of students that appear every year is about 1500, right? और वो 1500 बच्चों में से, so basically UPSC releases the combined number for IES and ISS, separate नहीं देते, लेकिन फिर भी एक अंदाजन हम बोल सकते हैं कि करीब 1500 बच्चे इसके लिए बैठते हैं. And of those, an average of 36 are selected for the interview. So the chances are about 2.5 in 100 phase 1 में, and then 1 in 2.5 in phase 2, right? So it is not, I wouldn't say the competition is negligible. It is definitely not negligible. तो क्या अच्छा कंपटीशन है, लेकिन कंपटीशन मैसिव, रैंडम और क्रॉस डिसिप्लिनरी भी नहीं है जैसा कि यूपीएससी में होता है कि कोई भी आपका कंपटीशन हो सकता है. नहीं, दिस इज ए स्पेशलिस्ट पूल. यू विल हैव एमए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स, इकोनॉमेट्रिक्स में स्पेशलिस्ट ये लोग होंगे. तो कंपटीशन बहुत ही डिफाइंड और फोकस्ड होगा, right? So for a well prepared economics graduate, the probability of cracking IES is meaningfully better than UPSC CSE. So ये एक fact है. It's not just motivation. It is a better prospect if you are really into this exam, and it is a realistically achievable target. Okay, now let's move to exam pattern. Let's look at the structure of the exam. I'll just give you a brief over here, and I will also talk about the entire syllabus. तो इसमें क्या होता है, IES का जो सिलेक्शन होता है, it happens in 2 stages. इसमें कोई फर्स्ट MCQ फेज नहीं होता है. The first phase is your written exam, which is of 1000 marks. So there are 6 papers in it. सारे के सारे descriptive होते हैं. There is no MCQ component, as I said. 2 papers are non-economics papers. So your general English and your general studies, ये वाले non-economics papers हैं. ये day 1 पे हो जाते हैं. 19 तारीख को अभी इनका पेपर होगा. These are each of 100 marks. Then on day 2, you have general economics 1 and 2, and each of them is 200 marks. Day 3 पे general economics 3 and general economics 4. So GE4 is basically Indian economics. ठीक है. So ये 6 पेपर्स होते हैं. 3 दिन इसका एग्जाम चलता है. एंड आउट ऑफ दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि आईएएस रिटन एग्जाम होता है, उसमें एमसीक्यू नहीं होता है. You need to know economics, but you also need to be able to express economics. So this is an exam that will reveal the quality of your understanding through the quality of your writing. So rote recall enough nahi rahega. IAS will reward students who can do 3 things together: explain theory, apply it to India, and write it clearly under the time pressure. Now let's come to the syllabus. Okay, so मैं पूरा syllabus नहीं पढ़ने वाली हूँ. It will be boring as well as overwhelming for this video right now. And in fact, there's going to be a live session about this in a few days where we will do exactly this. हम बिल्कुल ही deep dive में जाएंगे syllabus पे. अभी के लिए what I want to give you is the logic of each paper. ये बहुत सारे बच्चे जो बहुत प्रिपरेशन में अपने आगे भी बढ़ जाते हैं, वो भी इस लॉजिक को समझ नहीं पाते हैं. एंड फिर वो याद रखना पड़ता है कि किस वाले पेपर में क्या था. लॉजिक समझ लेंगे तो हमको पता रहेगा कि कौन से पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक.
उसके बाद हम एक और काम करेंगे, हम ओवरलैप भी देखेंगे आईईएस और यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, ठीक है। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ दी 4 GE पेपर्स। और जीएस में क्या आता है, आई विल जस्ट टेल यू ब्रीफली, बट एनीवेज इकोनॉमिक्स वाला भी पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो there are 4 papers, GE 1, 2, 3, 4. General Economics 1 is micro plus quantitative economics. ठीक है, so this paper covers your micro and quant. Micro side में you have consumer demand theory, right? Production cost theory, market structures, price theory, welfare economics, factor markets, distribution, ये सब. You also have the portion of public economics, जहाँ पे we deal with market failure, right? So you have externality, public goods, asymmetric information, ये सारी चीजें इसमें होती हैं. Finally, a few basics of game theory are also part of this, क्योंकि हम market structures पढ़ते हैं, oligopoly पढ़ते हैं, so all of this require talk about strategic interaction. यहाँ पे game theory के भी कुछ concepts होते हैं. On the quantitative side, you have mathematical methods for economics, you have linear programming problems, some stats, regression analysis, उसमें भी time series भी होता है उसमें, index numbers, and regression analysis में you will also have issues, basically heteroscedasticity, autocorrelation, multicollinearity, ये सारी चीजें are part of your GE1. GE2 जो है ये covers economics from a macro perspective. So this is the macro side of things. So you will have inside it macro as we know it, but you will also have other things that are macro. So you will have money, banking, financial markets, financial institutions. You will have international economics क्योंकि उसमें भी हम पूरा macro की बात कर रहे होते हैं. And you will also have growth and development. Plus you will also have history of economic thought. ठीक है, सो मैक्रो साइड में तुम्हारा नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, इन्फ्लेशन, मनी, मनी तो खैर मैंने बोल दिया, जो ISLN मॉडल हो गया, मंडल फ्लेमिंग फ्रेमवर्क हो गया, राइट, फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट, ऑल दिस. इंटरनेशनल में यू विल हैव द ट्रेड थ्योरीज, यू विल हैव द BOP, एक्सचेंज रेट, उसके साथ साथ IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, G20, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड होंगी. देन growth and development में you will have the theories of growth, you will have theories of development, जो traditional theories हैं और जो थोड़ी parallel theories हैं, both will be included. Plus you will have poverty, inequality, and they have also started asking questions more and more on the relationship between on the intersection of growth, trade and environment. So environment का भी component अभी increase होने लग गया है. Finally, history of economic thought रहेगा जहाँ पे you have ideas of the major schools. So you start from mercantilism and even before that physiocrats and all. And उसके बाद तुम पूरा development देखोगे how the thought has evolved over the decades. This is general economics 2. General economics 3 क्या है? This is basically broadly about policy, or rather the theory of policy, theory of public policy. So you have the public policy aspect of public economics, taxation theory, structure, then you have public expenditure, public debt, in सबके theories, cost benefit analysis. Environmental economics में क्या रहेगा इसमें? Environmental valuation, different environment values, environment policy instruments. You also have industrial economics because we are going to talk about industrial policy, competition, anti monopoly practices, right? Market structure, industry dynamics. So these are all the topics जहाँ पे हम policy की बात कर रहे होते हैं. In theory क्या policy होनी चाहिए किसी एक particular structure में? In theory. And this is where your state market planning debate also features. किसी GE3 में प्लानिंग और स्टेट और इन सब का क्या रोल है, इंटरप्ले क्या है, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस इसमें आते हैं. फाइनली यू हैव द GE4 विच इज योर इंडियन इकोनॉमी या इंडियाज डेवलपमेंट स्टोरी या द रियल part. This is where you move from theory to the real world. So this paper is going to cover India's economic journey. So starting from the planning era, फिर 1991 reforms, post reform period, यहाँ पे सब कुछ फेडरल फाइनेंस, यूनियन बजट, पॉवर्टी मेजरमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फिर अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर मार्केट, फॉरेन ट्रेड,
मनी, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ये सब कुछ कवर होगा. एंड दिस इज द पेपर दैट कनेक्ट्स डायरेक्टली टू करंट अफेयर्स. सो यू विल हैव टू गो थ्रू द इकोनॉमिक सर्वे, द यूनियन बजट, आरबीआई रिपोर्ट्स, ये सारी चीजें यहाँ पे रेलिवेंट रहेंगी. द पोर्शन ऑफ द करंट हैवी पोर्शन, दिस इज इंडियन इकोनॉमी कंपेयर टू यूपीएससी. यूपीएससी में काफी ज्यादा बैलेंस्ड होता है. आई जस्ट गेट टू दैट. IES is much more heavy on the current affairs, current schemes, current reports, status of the economy, status of the social indicators, all these things. Okay. Now let us move to the overlap between the syllabus of IES and UPSC. So this is the comparison that I really want to show you कि कितना significant overlap है. और this is what will tell you that IES कितना strategically powerful career path भी हो सकता है if you have taken economics optional in your CSE preparation. मतलब I don't recommend doing them together, बट आई डू रेकमेंड कि अगर फर्स्ट ईयर में आपने अगर आप सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं एंड फर्स्ट ईयर में आपका सिलेबस सब फिनिश हो गया अक्रॉस द जीएस पेपर्स एज वेल एज योर इकोनॉमिक्स पेपर, in the second year you can very well incorporate your preparation for IES and keep it as a backup. It may not be a backup, you can have IES as your primary goal as well, but this other thing also works. ठीक है. सो लेट्स लुक एट दिस. यू विल सी दैट यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखा है और यहाँ पे लिखा है कि किसमें होता है किसमें नहीं होता है. This the one on the left called left panel of the table, you see that you have micro, macro, public finance, public economics, right? Money and banking भी macro में इसमें मैंने डाला हुआ है, and international economics, growth and development, and Indian economy. ये दोनों में ही रहते हैं. So in UPSC you have Indian economy in paper 2. Some of growth and development के कुछ real sector से related questions are in paper 2. बाकी all this theory is in paper 1. And for IES, as I explained, these are spanned across paper 1, 2, 3, 4. Environmental economics जो specifically about environmental valuation and all those things, वो सिर्फ IES में होता है. कुछ चीजें, the overlap with growth and trade is also covered in optional. These are the things that are basically extra on the right hand side panel. There are things that are extra in IES. So you have the extra ones. Advanced micro. Advanced micro क्या है basically? UPSC का micro is not about the utility functions. It is not about Shepard's lemma. It is not about cost functions. Numericals नहीं होते हैं उसमें. IES में होते हैं. So advanced micro is that. Stats and econometrics is not part of optional. Math methods, linear programming, again only IES. Financial markets में जितना depth में IES पूछता है doesn't come in optional. Industrial economics not in optional. History of economic thought not in optional. लेकिन optional में एक चीज होती है, economic history of India. So that is the economic history of India before independence, and that is only part of your optional. That is not part of your IES. लेकिन ये जो सारी चीजें हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा चीजें, इनको करने में करीब 1 से 1.5 महीना लगता है. उसके अलावा जो ये एंटायर लेफ्ट हैंड पैनल पे चीजें हैं, इनको करने में मेजर चंक ऑफ द टाइम लगता है. एंड दैट इज व्हाई एनीवेयर यू स्टडी, including at Econiti, this is where we start. We build the foundation for both, and then once this foundation is done, तब हम सिर्फ जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स होते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं, वो उससे हम कवर करते हैं फॉर IES एंड फॉर RBI. अनदर गुड थिंग इज कि ये जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो ऑप्शनल में नहीं है, they are also part of the other backup exams that you will have. So they are also part of RBI, they are also part of UGC NET, CUET, PG इकोनॉमिक्स. सो ये सब का बस एग्जाम का लेवल फर्क होता है, पैटर्न फर्क होता है. अ फ्यू टॉपिक्स हियर, अ फ्यू टॉपिक्स देयर, बट ये सब का ओवरलैप मैसिव है. प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यही है कि इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर IES, a large part of your economics optional foundation will get built as a byproduct, right? If you have already prepared for optional, तब कुछ चीजें ऐड करके तुम्हारा IES का प्रिपरेशन हो जाएगा very meaningful, very fast. Okay.
So this is mota mota about your seats, about your syllabus, syllabus overlap, and paper pattern. Now let's come to that question, the decision framework, कि भाई आपको seriously IES consider करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. And I will again use the same framework, same questions, 4 questions जो मैंने तुम्हें दिए थे, and we will answer it and we'll see कि भाई this fits you or not. First, what is your time horizon? IES is a path which is faster than UPSC. एक साइकिल 6 से 8 महीना for a serious MA economics students, 1 से 2 साल में, 1 से 2 attempts में cracking this is realistic. I suggest that first year you do not do any job. Second year में आप किसी चीज के साथ भी इसका preparation कर सकते हैं. So if you are 24-25, MA complete हो चुका है, you want a government career without a 3-4 year UPSC marathon, तो IES एक बहुत ही real option है. Time horizon is something that strongly favors IES. Okay. Then the second question was, what is your risk tolerance? IES is also competitive. 16 सीट कोई बहुत ज़्यादा सीट नहीं है, लेकिन रिस्क थोड़ा ज़्यादा डिफाइंड है, पूल स्पेशलाइज्ड है, और सिलेबस फोकस्ड है. सो द हिट रेट इज बेटर फॉर वेल प्रिपेयर्ड इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स. यूपीएससी जैसा हाई वेरिएंस बेट इसमें कम है, राइट. सो अगर फैमिली प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, या फाइनेंशियल अर्जेंसी है, या थोड़ा और स्ट्रक्चर्ड रिस्क चाहते हो, तो IES प्लस DPR साथ में, ये दोनों का रैशनल बेट बनता है. थर्ड, इंटरेस्ट क्या है? दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज वेरी स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट फॉर IES, कि do you have a general interest in policy, in public finance, in development economics, right? Scheme design, fiscal analysis, data driven policy work. अगर हाँ, तो IES will use all of that every day. अगर ड्रीम जो है वो कलेक्टर बनने का है, पब्लिक फेसिंग रोल चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, तो IES विल नॉट गिव यू दैट. सो अपने साथ ऑनेस्ट रहना यहाँ पर जरूरी है. फाइनली, द जॉब सूटेबिलिटी. आपका डेली लाइफ होगा एनालिसिस, राइटिंग, इंटरमिनिस्टेरियल कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी थिंकिंग, data interpretation. You'll not be in the field, you'll be in the world of research and policy. So if you thrive in analytical environments, तो IES will be a natural fit. अगर ऐसा नहीं है, तो IES may feel limiting to you over time. So you need to ask yourself कि not just कि can I clear this exam, but also can I see myself doing this work every day for the next 20-30 years. ठीक है. Finally, I'll keep this very brief. Backup sequencing, I have already talked in detail about it. तो क्लोजेस्ट बैकअप रहेगा RBI, है ना. दोनों का सिलेबस ओवरलैप स्ट्रॉन्ग है, दोनों में रिटन कंपोनेंट बढ़िया है, तो एक ही प्रेपरेशन बेस चाहिए होता है. अकेडमिक बैकअप के लिए यू हैव योर UGC नेट इकोनॉमिक्स, एंड यू ऑल्सो कैन डू अ CUET PG का प्रेपरेशन इफ यू आर एमिंग फॉर अ बेटर MA program. Now, I'll just give you a quick note on Zaptic over here before I move to how to prepare. Is that अगर जो है IES के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और अगर इकोनीति के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, तो IES डज नॉट रिक्वायर Zaptic, है ना. उसमें क्योंकि कोई MCQ कंपोनेंट नहीं है. लेकिन जो बैकअप एग्जाम्स हैं, they will require MCQ practice, your RBI, your MCQ, your UGC NET, CUET PG. तो ये सारे के लिए जो adaptive platform है Zaptic, it will be covering all of it. So RBI is already out there, UGC NET भी ready हो जाएगा अक्टूबर तक, CUET PG भी दिसंबर जनवरी तक ready हो जाएगा. So हमारे जो भी students हैं, उनका access will be complimentary, and backup preparation जो है वो तुम्हारा एक structured test support inbuilt रहेगा equality. Now let's get to the preparation philosophy that you should have for this. A few principles, I'll just lay them out quickly. IES writing heavy है, concept heavy है, तो 4 core preparation principles होने चाहिए. कॉन्सेप्ट क्लैरिटी फर्स्ट होना चाहिए, ब्लफिंग नहीं करना है इसमें. एग्जामिनर को पता है कि तुम्हें, एग्जामिनर को आता है तो उसको पकड़ लेंगे कि भाई तुम्हें कितना आता है, राइट. PYQs you have to start early. Day 1 से PYQs आप देखिए, समझिए the pattern, the depth, the flavor of the questions. Answer writing from the first month. So descriptive answer writing शुरू करना है. जो टॉपिक पढ़ लिया उसका आंसर PYQ में से उठा के लिखना है. इसी तरह से प्रैक्टिस हम करवाते हैं यहाँ पर भी. So this is very important. Knowing theory and writing the theory are two different skills. So practice शुरू से ही करना पड़ता है. डायग्राम, फ्रेमवर्क, इंडियन एग्जाम्पल्स,
स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चीजें धीरे धीरे बिल्ड होंगी, लेकिन जितना पढ़ लिया है उसका प्रैक्टिस शुरू से ही करना चालू कर देना। एंड फाइनली ओवरऑल दी एम शुड बी कि थ्योरी और करंट अफेयर्स सेपरेट नहीं करना है। अल्टीमेटली एम ये रहेगा कि दोनों को कंबाइन करके चलना है। सो इट IAS will reward student who will place the economic survey inside a theoretical framework. That integration is the skill. All right. All right. So before we close, the thing that we should remember is that IES is a hidden gem, not because it is obscure, right? It is a hidden gem because economic students don't give themselves permission to seriously consider it, right? Um, Remember, IES is not a backup for people who couldn't crack UPSC. It is a primary career path in its own right. For serious economic students, ये तुम्हारी लिस्ट में होना चाहिए। प्राइमरी लिस्ट में नहीं भी है तो भी आरबीआई के साथ एक बैकअप में होना चाहिए। अगर आरबीआई कर रहे हो, यूपीएससी के साथ भी इसे बैकअप बना सकते हो फ्रॉम दी सेकेंड ईयर आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द सिलेबस। ओके, ऑलराइट, so that is it for today. The links for our July batch for UPSC optional, as I told you, optional IES RBI का overlap कितना है, तो वो सारे जो links हैं we'll start in July. All of them are in the description. We teach precisely around the philosophy that I just explained, concept clarity, syllabus coverage, answer writing, and Indian application, right? We also, as I said, preview lectures channel pe hain already, and there are more detailed preview course that I have created. It is available freely on the portal. Again, the links are in the description. Plus, if you want any guidance, the contact details are on the website. We are always happy to help. So yeah, in the next video हम क्या बात करेंगे? हम बात करेंगे RBI के बारे में. Okay, so we are going to go do a deep dive on RBI, the same depth that we have seen in IES today. So yeah, so thank you very much. Stay with Econiti. We will build this step by step.